students. And let's talk about a fresh new topic today, and that is the Chinese Revolution of 1911. वैसे तो चाइनीज़ रेवोल्यूशन जब हम बात करते हैं तो हम टू रेवोल्यूशंस की बात करते हैं, वन 1911 एंड द अदर इज़ द रेवोल्यूशन इन 1949. Now, in this video lecture, मैं सिर्फ I will be talking about the Chinese Revolution of 1911, उसके causes, events and results. So, without wasting any time, let's start with our thing. Now, Chinese Revolution जो है 1911 उसकी खास बात क्या थी? It ended China's last imperial dynasty, and that was the Manchu-led Qing dynasty. Right, and led to the establishment of the Republic of China. So इस revolution ने दो चीज़ें की. सबसे पहले चाइना का जो last dynasty थी, that is the Manchu-led Qing dynasty, वो ख़त्म हो गई and इसकी जगह पर क्या establish हुआ? The Republic of China. Right, so this revolution is what we are going to talk about कि ये change जो है वो कैसे हुई, what were the causes for the same. Right. Now, causes करने से पहले let's just look at the background, right? And let me have my pointer as well. Now, you have to understand कि causes तो हम करेंगे, but what was the background? Now, 19th century में China was being ruled by the Manchu rulers or the Qing dynasty, right? And the central government of Peking, now what we call as the Beijing, had become very weak. एक और बात थी, अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हैड बिकम वीक, उसका कारण एक ये भी था क्योंकि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के मीन्स जो हैं दे वर नॉट वेल डेवलप्ड, सो द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, और इसी का फ़ायदा उठा के प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स हैं दे हैड बिकम इंडिपेंडेंट और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी को उन्होंने वायलेट करना शुरू कर दिया. इस टाइम पे बच्चे चाइना बहुत सारी वॉर्स में हारा था, सो इस वजह से बहुत सारी वॉर इंडेमनिटी भी उनको पे करनी पड़ रही थी, और क्योंकि फॉरेनर्स हैड कम इन चाइना, सो मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ चाइना दे वर डोमिनेटेड बाय द फॉरेनर्स. कोई भी नया टैक्स विदाउट देयर परमिशन कुड नॉट बी लेविड. नाउ बिकॉज the Chinese government did not have money, so वो ना तो अपनी कोई military powers जो है they could consolidate, and they could do nothing to get rid of the economic imperialism of the countries of Europe. And to top it all, the Manchu rulers, they failed to make any reforms in the country and led to the decline of the China. Now, see, ऐसा भी नहीं कि Manchu rulers did not make any reforms. They did, but they could not satisfy the disgruntled people of China, and as such paved the way for the revolution. Right? Now, ये उस टाइम के लास्ट जो है प्रिंसेस हम कह सकते हैं तिस्सू हसी. Now, there was a outbreak of the Boxer Rebellion. देखो, Boxer Rebellion again showed how the discontented Chinese people wanted reforms in China. So, इसके बाद जो है Queen Tzu Hsi, she did think that कुछ ना कुछ steps मैं लूँ in the field of administration. She took reforms in education, military. Education में आप खास तौर पे अगर मैं कहूँ तो a network of schools arranged in a hierarchy that was planned. Or China में by about 1909 China had about 10,000 modern schools. आगे क्या था कि सिर्फ चाइनीज़ सिविलाइजेशन, चाइनीज़ हिस्ट्री को ही पढ़ाया जाता था. रिफॉर्म ये हुआ कि वर्ल्ड हिस्ट्री, जोग्राफी, मैथ्स एंड साइंस दैट ऑल्सो बिगैन टू बी डन. मिलिट्री की अगर हम बात करें बच्चे तो ऑब्वियसली लॉट ऑफ रिफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री वाज डन. She created a national army with 6 divisions, modern equipments, and even Japanese military instructors were also appointed. एक और जो most important था, उन्होंने लोगों की कोऑपरेशन सीख करने के लिए इलेक्टेड जो है
provincial assemblies were organized in China, right? लेकिन इनके डेथ के बाद the new emperor was Prince Puyi, and he was a small 5-year-old nephew of the princess, and the regent, इनकी देख रेख जो है इनके father Prince Chun, he continued the reform. सो क्योंकि नेशनल असेंबली वॉज देयर, सो नेशनल असेंबली जो है इट कंडेम्ड एंड क्रिटिसाइज द वर्किंग ऑफ द असेंबली. नाउ दिस इज सम काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड where I think the things are much more clear that this revolution, it brought the end of the Manchu dynasty, and Manchu dynasty was replaced by Republic of China. हम ये भी देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस टाइम पे वीक थी क्योंकि ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उतना डेवलप नहीं है. प्रोविंसेस में दे आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज देयर कंट्रोल. प्रोविंसेस जो हैं दे आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट. China के income के sources are dominated by the foreign, so these people they do not have the enough finances to bring about the reforms, right? And moreover, whatever reforms they did, they were not enough to satisfy the people of China. And special mention I talked about the Queen, the Tzu Hsi, right? उनके time पे कुछ reforms हुए, but ultimately, the whole power was shifted in the hand of a 5-year-old or a 3-year-old Pui, and Prince Chun could not do as such, could not bring about that reforms. अब बात करते हैं. Let me have my pen now rather than the thing. Just right. So let's talk about the causes. देखो आपके बुक में causes और भी हो सकते हैं. These are the most important causes which I will be talking about. Rising population, natural calamities, contribution of the Chinese immigrants, impact of the Western culture, then is newspaper, the railway policy of Chinese government, and most important, work of Dr. Sun Yat Sen. So let's talk about these things. And जब हम स्प्रेड की बात करेंगे, सो वन इज़ दी हैंको इंसिडेंट. अब ये हैंको जो है ना, इसके स्पेलिंग कहीं पर HANKOW है, कहीं पर HANKOU भी है. So just remember that Hanko incident and the outbreak of the revolution. फिर कैसी revolution expand करती है, constitutional government होती है, and reaction of the reactionary government, right? And then third part will be the impact of this movement, the revolution. ओके, सो पहला कारण है बच्चे इंक्रीज इन दी पॉपुलेशन. अब आपके मन में आएगा कि चाइना तो बहुत बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन अगर राइज भी कर रही है, सो व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम? इट इज़ नॉट लाइक दैट. चाइना में अगर हम बात करें तो चाइना का बहुत सारा एरिया जो है दैट इज़ नॉट वर्दी ऑफ एग्रीकल्चर. सो मोस्टली उनकी टेरेन जो है दैट इज़ नॉट कंड्यूसिव टू फीड एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. एंड पॉपुलेशन ऑफ चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी. अगर मैं 1885 की बात करूं तो पॉपुलेशन वाज 37 करोड्स, एंड इन 1910 द पॉपुलेशन इंक्रीज टू 43 करोड्स. ना मांचू रूलर्स जो है दे डिड नॉट डू एनी एफर्ट. या तो आप पॉपुलेशन को डिक्रीज करो या आप इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए इंक्रीज इन प्रोडक्शन करो. वो कुछ भी करने में जो है काबिल नहीं थे. And hence the people of China, they began to starve because of the lack of agriculture production. People were dissatisfied, and ultimately that led to the outbreak of the revolution. नंबर 2, नेचुरल कैलामिटीज़. सो यहाँ पर जो है येलो रिवर की बात करते हैं हम. येलो रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज द सोरो ऑफ चाइना. हालांकि इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्रैडल ऑफ द चाइनीज सिविलाइजेशन. लेकिन चाइना में ये नेचुरल कैलामिटीज़ जो हैं दैट अफेक्टेड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. चाइना वॉज अफेक्टेड समटाइम्स बाय फ्लड्स, बाय ड्राउट्स, राइट. सो इस तरीके से इस टाइम पर जब नेचुरल क्लैमिटीज़ आती हैं, अगर रिलीफ वर्क इज़ नॉट प्रॉपरली कैरिड, राइट, सो व्हाट इज़ द रिजल्ट? दैट पीपल सफ़र बिकॉज ऑफ हंगर, राइट. सो यहाँ पर ये सारी नेचुरल क्लैमिटीज़ जो हैं उसको डील करने के लिए द मांचू रूलर्स वर नॉट enough. They were not doing enough
to redress the grievances of the people, right? So इसका नतीजा ये हुआ कि people, they were, they wanted to revolt against the inefficient Manchu rulers. Number three, the contribution of the Chinese immigrants. Now, because उनके अपने country में there is the population rise है, there is lack of food production, so these Chinese, in search of livelihood, they started moving to the newer countries. और जब ये new countries में गए, वहाँ से ये बहुत सारे आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ये सब आइडियाज़ जो हैं वो चाइना में लेकर आए, राइट? और कहीं ना कहीं these ideas also gave birth to the Chinese Revolution of 1911. Sorry. Now, देखो, पहले तो बहुत सारे चाइनीज़ जो हैं दे वेंट टू अमेरिका, लेकिन धीरे धीरे अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी उनकी एंट्री के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए. यहाँ से दे वेंट टू हवाईन आइलैंड्स, फिलीपाइंस, कनाडा एंड सिंगापुर. यहाँ पर दो चीज़ें हुई. वन, these people, they now understood many of the Western ideology of equality, of democracy, of republic. Number two, and the most important, ये Chinese जो है, जो ये बाहर गए थे, they earned a lot of wealth. इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हुई. उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जितने भी चाइना के रेवोल्यूशनरीज थे, ये उनको वेल्थ इन्होंने देना शुरू कर दिया. यानी कि दे बिगैन टू फाइनेंस द चाइनीज रेवोल्यूशनरीज. सो दैट अगेन बिकेम वन ऑफ द रीजन फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ 1911. Then is the contribution of the Western ideas. I told you बच्चे, जैसे जैसे ये लोग बाहर गए, the Western ideas of equality, liberty, fraternity, democracy, republic, ये सब से बहुत ज़्यादा influence हुए और कहीं ना कहीं they wanted the same in their own country. Right now, for centuries, knowledge of Chinese civilization, culture, literature, that was compulsory for the administrative services. लेकिन अब धीरे धीरे जो है, under the impact of these foreigners, Western education was made compulsory. और Western education का मतलब था they also became conversant with these Western ideas, right? And they wanted to put those ideas into their own culture and civilization as well. Right? Then contribution of the newspapers. देखो, newspapers जो है वो हमेशा they are the harbingers of change. Printing of newspapers that began in the later half of the 19th century. These newspapers, they were edited by people जो militant ideology के थे, जो wanted a change in the society. So these newspapers also played a very important role in the development of the revolutionary people. It actually awakened people from the slumber, and उन्हें ये realize हुआ कि जब तक वो revolt नहीं करेंगे, and revolution is the only solution for their backwardness, right? There is discord with the provinces. देखो, इसको ना मैं आपसे एक मैप में शेयर करना चाहूँगी. This is somewhat the map of China. These areas which you can just see here, Hubei, Henan, Hangyang, Wuchang, ये सारे आपके छोटे छोटे provinces हैं, right? And ये provinces जो हैं, अब आप समझ पाओगे, and let's just go back to that point I was talking about. Now these provinces, they had become very important. Now since the Taiping rebellion, चाइना में रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया था कि ये जो प्रोविंसेस के लीडर्स हैं, ये अपने अपने इम्पोर्टेंट पावर बन रहे थे, राइट? इनकी अपनी अपनी छोटी छोटी आर्मीज़ बन रही थी. सो ये आर्मीज़ जो है, दे वर लॉयल टू देयर रीजनल गवर्नर्स रादर दैन टू द सेंटर. सो ये डिस्कॉर्ड जो प्रोविंसेस और सेंटर में था, ये भी एक तरीके से इस
रेवोल्यूशन का एक रीजन बना, राइट? सो रीजनलिज्म स्टार्टेड इन चाइना वेयर दीज प्रोविंशियल लीडर्स, और जिन्हें हम गवर्नर्स भी कहते थे, दे फाइनेंस्ड एंड ऑर्गेनाइज द लोकल आर्मीज. द लोकल armies were only loyal to the provincial leaders. Gradually, many provincial rulers they declared their independence. और धीरे धीरे ये जो provincial rulers जो है, they brought about the revolution which just spread from one province to the other. राइट? ऑफ कोर्स ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मांचू रूलर्स जो है, क्विंग चिंग डायनेस्टी जिसे हम कहते हैं, इनके रूलर्स वर इनएफिशिएंट. और इनकी इनएफिशिएंसी आप कहाँ देख सकते हो? रिपीटेड मिलिट्री डिफीट्स ऑफ चाइना. सबसे पहले बचे फर्स्ट एंड सेकेंड ओपियम वॉर्स 1839 से 1860. चाइना वॉज एब्सोल्युटली डिवास्टेटेड. 1885 में सिनो फ्रेंच वॉर के साथ अगेन चाइना वॉज डिफीटेड. फिर आप देखो कि जापान जैसे छोटे से कंट्री से चाइना इन 1895 फिर से हार गई. सो यहाँ पर लोगों को ऐसे लगा कि चिंग डायनेस्टी जो है, दैट इज़ एब्सोल्युटली अ वीक डायनेस्टी, and people lost all the confidence in this dynasty. और चाइना को under this Manchu rulers or the Qing dynasty, they had to sign series of unequal treaties with the Westerners. As a result, they had harmful effect on the China's industrial development. There was level of unemployment was very high. The foreigners could build factories in China, and foreign goods जो है, they could not compete with the local goods. देखो बाय दिस टाइम हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की भी बात की है. सो बहुत सारे कंट्रीज़ में, यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई थी, लेकिन चाइना में तो अभी तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी नहीं आई थी. सो ये लोग जो हैं अभी भी पुराने तरीक़ों से देवर फंक्शनिंग. सो पीपल put the entire blame on the government to resist these foreign aggressions, right? And whatever was happening in China in terms of the economically China developed नहीं है, चाइना में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, चाइना ने इतनी सारी अनइक्वल ट्रीटीज साइन की है, इतने सारे वॉर इंडेमिनिटी का पैसा वो दे रहा है. सो ये सारा किस पे ब्लेम आया? दी मांचू रूलर्स के ऊपर. एंड दिस रेवोल्यूशन वाज कि इन रूलर्स को हटाकर एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाइना जो है, दैट शुड बी इस्टेब्लिश्ड. नाउ व्हाट बिकेम द इमीडिएट कॉज? देखो इमीडिएट कॉज बनता है, रेलवे लाइंस जो है वो सेटअप की जा रही थी, राइट? और रेलवे लाइंस को सेटअप करने में प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ वांटेड देयर से. लेकिन इस टाइम पे मांचू रूलर्स को ये लगा कि ये लोग जो हैं, ये जो प्रोविंसेस हैं, दे आर नॉट फिट टू ड्रॉ दीज रेलवे लाइंस. सो उन्होंने पहला क्या किया कि ये रेलवेज़ का टॉपिक जो है इसको नेशनलाइज कर दिया, कि रेलवे लाइंस ले डाउन करने का जो रोल पहले प्रोविंसेस को दिया गया था, उनसे लेके इसको नेशनलाइज कर दिया. और फिर 60 लाख पाउंड का जो लोन है उन्होंने 6 कंट्रीज से लिया. एंड this is where the problem started. Now railway building was carried on by the provincial authorities, but the Qing or the Qing court decided कि railway lines को nationalize किया जाए ताकि लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं वो सारा रेवेन्यू ना ले सके. नाउ दिस वाज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय द प्रोविंशियल अथॉरिटीज़, स्पेशली इन सिचुआन where the gentry, the landlord owners and merchants ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था जहाँ पर ये रेलवे लाइन जो है ये प्रपोज की गई थी. This dispute led to railway protection societies, led to the Qingdao massacres, and यहीं से this quickly led to a nationwide anger, and this is where the revolution started. 2 रेलवे लाइन जिसको मैं आई थिंक आई मिस्ड इट हियर, मैं आपको वैसे बता देती हूँ. देखो एक लाइन थी आपकी हैंको कैंटन लाइन, दूसरा थी आपको हैंको चुआन लाइन, राइट? सो ये 2 लाइंस जो हैं वो करनी थी, और 60 लाख पाउंड का कर्जा जो है. और बेटे जब आप कर्जा लोगे या आप इनसे लोन लोगे, दैट मीन्स यू विल हैव टू गिव प्रेफरेंस टू दीज फॉरेनर्स. दिस इज़ व्हाट वाज नॉट टू द लाइकिंग ऑफ द प्रोविंसेस, एंड दिस इज़ वेयर द रेवोल्यूशन स्टार्टेड,
राइट। इस रेवोल्यूशन में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, दैट वाज प्लेड बाय डॉक्टर सन याट सन। नाउ ही वाज बोर्न इन क्वांगटोंग प्रोविंस एंड उनकी जो एजुकेशन है दैट ही टुक फ्रॉम हॉनोलू, एंड अपनी मेडिकल एजुकेशन जो है वो हांगकांग में की। अ, वो हांगकांग में थे जब जब जापान से चाइना हार गया, एंड ये उनके लिए बहुत शर्मनाक बात थी। एंड उन्होंने क्या किया कि मांचू रूलर्स जो हैं उनको कुछ रिफॉर्म्स के बारे में उन्होंने लेटर्स लिखनी शुरू की कि ये रिफॉर्म्स किए जाए, क्योंकि ये चाइना के लिए बहुत शर्म की बात थी कि जापान जैसे छोटे से कंट्री से, एंड चाइना की आर्मीज़ कोई बहुत छोटी नहीं होती थी। चाइना की आर्मी जो होती थी वो लाखों में होती थी। सो लाखों की आर्मी से जो है जापान जीत गया। सो ये उनके लिए बहुत शर्म वाली बात थी, एंड ही ट्राई टू ब्रिंग अबाउट दीज रिफॉर्म्स थ्रू दीज रूलर्स। उनका कोई भी ऐसी रिफॉर्म्स जो है उनका कोई एक्सेप्ट नहीं किया, एंड ही शिफ्टेड टू दी हवाईन आइलैंड्स, जहाँ पर उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था रिवाइव चाइना सोसाइटी, हिसिंग चुंग हुई। राइट। सो इस सोसाइटी के साथ ही स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग रेवोल्यूशंस हेयर एंड देयर, एंड फंड्स भी रेज किए। देखो, ऐसा नहीं कि डॉक्टर सन यात सन की 1911 में थी। इनफैक्ट 1908 से लेके, इनफैक्ट 1905 से लेके 1911 तक बहुत सारी रेवोल्यूशंस जो है डॉक्टर सन यात सन ने ऑर्गेनाइज की थी, ऑल्दो दे कुड नॉट बिकम दैट पॉपुलर। Now, the head office of this Revive China Society was set up in Hong Kong, and यहाँ से जो है वो Canton. Let me just show this place to you. This is somewhat here actually. This is not named here. I'll just show it to you. That was namely a port town. I'll definitely show it to you. Just give me a second. Right. एक बार पढ़ लेते हैं, then I'll show you this place of Canton. राइट। सो कैंटन में उन्होंने एक जो है अटैक करने की कोशिश की। ऑब्वियसली द कॉन्स्पिरेसी वाज एक्सपोज्ड एंड ही हैड टू फ्लेड फ्रॉम चाइना, और यहाँ से चाइना से इन 1899 वो गए। ही रिमेन्ड एज एन इमिग्रेंट इन जापान, और वहाँ से रहकर भी बचे। उन्होंने बहुत सारी रेवोल्यूशन जो वो प्लान करते गए, लेकिन ऑल दीज रेवोल्यूशंस वर क्रश्ड सिवियरली। लेकिन फिर भी the popularity of Sun Yat-sen really increased. बाद में in 1905 he organized another party by the name of Tung Ming Hui, right? This was organized, and इसका aim क्या था? This aim of the organization was कि आप provincial officers को inspire करो not to cooperate with the central government, and it aimed at ending the reign or the rule of the Manchu rulers, ताकि चाइना को वो सेव कर सके फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। एंड बिटवीन 1908 1911 lot of revolts broke out at various places. So while I was just kind of going through a lot of other books as well, this party, that is Tung Ming Hui, was actually formed by merging three more parties. You need not learn that much, but of course, just to add a little bit of extra thing, if you write all this, will obviously fetch you good marks. Like this is Hising Chung Mai, Hua Hising Hui, Kuang Fa Hui. ये three societies है: Revive China Society, China Revival Society, Restoration Society। इस सबको merge कर कर जो है Tung Ming Hui जो है आपका that organization was made. Now, before I talk about the spread, let me first show you the picture of Dr. Sun Yat Sen and the canton where I have been talking repeatedly about this province. This is the picture of Dr. Sun Yat Sen. And if I may talk about his, three things that he talked about, that how the revolution, on what it should be based on. Nationalism, number one. Democracy, number two. And socialism is number three, right? So these were his ideas. हम लोग इसको करेंगे भी। एक और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। टुंग मिंग हुई जिसकी हमने बात की है, अब वो ओथ क्या लेते थे? I swear under heaven that I will do my utmost for the expulsion of the Manchus,
restoration of the Chinese sovereignty, the establishment of the republic, and the equalization of the land rights. I swear to be faithful to these principles. So, this used to be the oath that the members of the society used to take. And this area here, if you can just see this area, sorry, Guangzhou. This was actually the original name of Canton. So just see the Canton, Hong Kong, Taiwan, also called as Formosa Islands initially. So this is the area where I am talking about the Canton area, if I may just specify that, right? So let's move on to our slides. All right. Now let's move to our spread, which is the second part. But before I've done that, I think now the causes are clear to you. Increase in the population, natural calamities. एक इसमें एक और चीज़ I think हमने बात नहीं की है. They used to call that Chinese का ये मानना था कि जो इतनी natural calamities आ रही थी, floods आ रहे थे, droughts आ रहे थे, this they call as the mandate of the heaven. वो कहते हैं कि ऐसे मानते हैं कि अगर रूलर सही से रूल नहीं कर रहे हैं देन दीज आर द साइंस व्हिच द नेचर इज गिविंग दैट द रूलर्स मस्ट बी रिप्लेस सो दे आल्सो कॉल्ड इट एज द मैंडेट ऑफ हेवन के we now because all these natural things are happening so that means we need to think about it कि we are not the good rulers. So natural calamities, contribution of the Chinese immigrants, contribution of the Western ideas, the newspapers, discord with the provinces, inefficient Manchu rulers, and then we talked about the immediate cause. Most important, the work of Dr. Sun Yat Sen, right? And his party Tung Meng Hui, right? And now we come to the spread. Now, जब भी हम spread की बात करते हैं, let me just show you where it all started. Right. So this is the area where it all started, and if you combine this whole area, it was where the revolution first started. The Hanko जो मैंने आपको पहले बताया था, that was the place जहाँ जो है accidentally bomb explode कर गया. And it was thought that the revolution has started. Government ने अपने forces भेज दिए उस revolution को curb करने के लिए. Suddenly new leaders were kind of put up here. So let's me just talk in detail about that. But this was the prime area where it started. Hankou, then Wuchang. Right. Now, how the events just came on. 9th October 1911, Qing dynasty announced कि railways को हम nationalize कर रहे हैं. Of course, that meant कि foreign loan of 60,000 pound will be given to them. Now, this happens on the 9th October 1911. 10th October अगले ही दिन जो है double 10 rising इसको कहते हैं. That's the name which is given to it, that this rebellion which started, they call it as the double 10 rising, that marks the beginning of 1911 revolution. Now this rebellion was the work of the members of New Army. They belonged to Literary Study Society which had contacts with the revolutionary intellectuals of Hunan, Hubei and Sichuan. Now bomb accidentally exploded at Hankou, from where the revolution started. Now on the evening of 10th, है ना, again I'll just tell you, 9th को nationalize किया, 10th को जो है आपका सुबह बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया, और उसी दिन शाम को the 10th October 1911 4 battalions of New Army mutant, right, उन्होंने public buildings को अटैक किया. और इस पूरे पैनिक में, how the revolutionaries now were taking on the buildings, Rucheng Ching and the commander of the army, they just left down. On the 11th October, Wuchang came in the hands of the revolutionaries. अब उनके पास कोई रूलर तो था नहीं, so they turned to these two leaders, Li Yuan Hung and Teng Huai Lung, right? Now let's just see everything on the map as well, right?
सो यहाँ मैंने आपको बोला इट बेसिकली देयर वाज अ बॉम्ब एक्सप्लोजन इन द हैंको इन द सीक्रेट फैक्ट्री ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड पहली बार जो है ऑल दीज रेवोल्यूशनरीज दे केम अंडर द फॉर द this thing कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है. The result was the police raided and arrested many people at Hong Kong. And from there, it actually started in Wuchang. The news of the spread of the revolution now spread to Wuchang, and धीरे धीरे बच्चे these all areas I've written Hunan, Hubei, there is Jiangxi. That is how the revolution now was just spreading. This blue area which I'm talking about is the area where the revolution started spreading, and then to Yunnan, right? The prominent towns of Hanyon, Henan, Hubei, Hikau, and the now revolution also spread towards the north. Right now, revolution spread in Hubei, Hunan, Yunnan, Shaanxi, Jingji, right? And by 27th of November, तो जो आपके ये Manchu rulers हैं, they were just left with these important areas, that is Manchuria, Henan, Chile, and Shantung areas, right? Now, what was the result? Now, an army was sent from Beijing. Now, they wanted to control all these revolutionaries because बच्चे revolution जो है अब वो इन सब areas में जो है that has started to spread. Now, the army from the Beijing or the Peking that was sent to these revolutionaries. But during this time, the governor, the military general at that time, Yuan Shikai, now he sent some demands to the king. Now revolution was becoming very powerful. हम देख रहे हैं कि हैंको से स्प्रेड करके कैसे रेवोल्यूशन स्प्रेड कर रही है. सो नेशनल असेंबली जो है उन्होंने मांचू गवर्नमेंट को कुछ रिफॉर्म्स के बारे में कहा. राइट रिफॉर्म्स बड़े इजी थे कि एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश करो, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है दे शुड बी रिलीज्ड. नाउ ऑन 30th October 1911 Manchu government they accepted the demands of the National Assembly because बच्चे इस टाइम पे they were aware that revolution जो है वो हैंको से अब तो बहुत ज़्यादा Wuchang and Hunan and so many other areas the revolution had spread. On 3rd November 1911, Emperor जो है he became a constitutional head. Right? Now, after accepting the demands of the National Assembly, the central government now made all efforts to crush the revolt. Right? ठीक है, they had accepted the demands of the National Assembly, but the time was कि अब जो ये revolution को एक बार suppress कर दिया जाए. और इसको सप्रेस करने के लिए दे नीडेड अ वेरी पावरफुल पर्सन एंड द आंसर वाज द जनरल मिलिट्री जनरल युआन शिकाई. सो एम्परर चुन जो है उन्होंने उनको इनवाइट किया टू टेक कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. सो ऑन 27th of October 1911 ही टुक रेन्स इन हिज हैंड. 3rd of November जो है प्रिंस चुन एम्परर चुन जो है ही एक्सेप्टेड हिमसेल्फ एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. And on the 8th of November 1911, Yuan Shikai was appointed as the Prime Minister and also the Chief of Army and Navy. Right? This is Yuan Shikai. He is appointed as the head of the China at this time. Right. Now, during he became the head of the China. But अब आप देखो बच्चे, it's just started from this area. It moved on till this area. Now by November, if you can see the whole area in this blue part was the place where the revolution had spread. Right? Now the time was to suppress the revolution and to take the reins of the administration in his own hand. But what had happened now was, देखो बेजिंग में तो आपका युआन शिकाई जो है द जनरल ही इज मेड द हेड ऑफ द चाइना.
लेकिन दूसरे साइड पे सन यात सन जो है ही वॉज इन अमेरिका एट दिस टाइम. सो व्हेन ही केम टू नो थ्रू द डेनवर न्यूज़पेपर दैट ऐसी एक रिवोल्ट हो गई है, सो ही केम बैक टू चाइना. एंड बिकॉज बच्चे चाइना में ही वॉज वेरी पॉपुलर, सो द पीपल ऑफ चाइनीज इन नैनकिन अपॉइंटेड हिम एज द हेड ऑफ द रिपब्लिक. सो बड़ा एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन चाइना में बन गया है. दो पैरेलल गवर्नमेंट्स बन गई है. बीजिंग या पीकिंग में युआन शिकाई और नैनकिन में इट इज़ डॉक्टर सन यात सन. लेकिन डॉक्टर सन यात सन, बिकॉज ही wanted द यूनिटी ऑफ चाइना, सो ही गेव इन द युआन शिकाई. उनको लगा कि युआन शिकाई लेट ही बी द प्रीमियर और द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना एंड लेट ही टेक कंट्रोल ऑफ चाइना. एंड उन्होंने जो है अपनी पोजीशन उनको जो है दे दी. राइट नाउ यहाँ जो है ऑब्वियसली द रेवोल्यूशन एंडेड. सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो 12th February, this is important date. Now 12th February, through their official proclamation, they say that the Manchu dynasty now comes to an end, right? The ruler Pikui, he abandoned his post, right? And this happens on the 12th of February. And on the 13th of February, Yuan Shikai, now he is appointed as the first president in the Nankin National Assembly, right? So this is how the revolution came to an end. कि इतने सालों से मांचू डायनेस्टी की जगह जो है चाइना emerged as the republic with Yuan Shikai as its first president. Now, when we talk about the end or the impact of this revolution, the one is it put an end to the dynastic rule. The revolution ended the Manchu dynasty, which meant that this dynasty, which lasted for about 2000 years, right? A new form of government, republic, replaced the old. This was a great milestone in the history of China. यानी कि आपका dynastic rule खत्म हो गया and republic comes to take its place. Number two, the revolution ended both the monarchical and despotic ideas. लेकिन बच्चे यहाँ पर हम थोड़ी सी बात ये कहेंगे कि युआन शिकाई जो है एक्चुअली तो रिपब्लिक के तौर पर ही थे, लेकिन धीरे धीरे यू विल सी दैट हाउ ही टुक द एंटायर पावर इनटू हिज ओन हैंड्स एंड हाउ कम्युनिस्ट फोर्सेस बिकम एक्टिव इन चाइना. ये हम लोग 1949 के रेवोल्यूशन में बात करेंगे इन डिटेल. नाउ इज़ द वीक सेंटर. ये ना कुछ जो है मैंने आपके लिए ईजी करके इसको लिख दिया है. नाउ न्यू रिपब्लिक जो बना था दैट फेस्ड अ थ्रेट फ्रॉम युआन शिकाई एंड हिज आर्मी, राइट? ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि टू प्रोटेक्ट द रिपब्लिक डॉक्टर सन यात सन जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया इन द फेवर ऑफ युआन शिकाई. अब युआन शिकाई के रूल के बाद पहली बात क्या कही गई थी कि इलेक्शंस विल बी हेल्ड, राइट? एंड सून आफ्टर द रेवोल्यूशन जितने भी आपके ये पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, राइट, दे ऑल ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू पॉलिटिकल पार्टीज, गेयरिंग देम फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस. जैसे आपके रिफॉर्मर थे लियांग ती चाओ, ही ऑर्गेनाइज द फॉर्मर रिफॉर्मर्स इनटू डेमोक्रेटिक पार्टी. लेटर दिस वाज अमलगमेटेड इनटू प्रोग्रेसिव पार्टी. लेकिन युआन शिकाई को सबसे ज़्यादा चैलेंज किससे था? द क्यूमिनटोंग पार्टी, और विच इज़ ऑल्सो नोन एज द नेशनल पीपल्स पार्टी ऑफ चाइना. और इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किसने किया था? द फॉर्मर मेंबर्स ऑफ तुंग मंग हुई. एंड दिस पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय एन एसोसिएट ऑफ डॉक्टर सन याट सन, राइट? सो 1913 में पहली पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुई इन रिपब्लिक चाइना इन विच क्यूमिनटोंग वाज सक्सेसफुल. नाउ अब युआन शिकाई जो है ही डिड नॉट वांट द पावर टू बी शिफ्टेड टू क्यूमिनटोंग. सो उन्होंने जल्दी से जो है ही ट्राई टू काइंड ऑफ crack down these revolutionaries. He also got the person Suang Jias, जिसने क्यूमिनटोंग पार्टी ऑर्गेनाइज किया था, to assassinate in Shanghai. Now assassination जो है ना बच्चे, that
caused a lot of confusion among the people of China. They did not have that kind of, that kind of feeling for Yuan Shikai. Moreover, लोग इसलिए भी गुस्से थे बिकॉज उन्होंने 25 मिलियन पाउंड जो है यहाँ से इन सिक्स पावर से लिए थे. Now, to deal with the yuan's high-handedness, during July and August 1913, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया. हालांकि इसको हम कई बार सेकंड रेवोल्यूशन भी कहते हैं कि ये सारे प्रोविंसेस ने जुलाई अगस्त 1913 में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया. यहाँ पर सन यात सन जो है, ही वाज नॉट हैप्पी विद हाउ अफेयर्स वर कमिंग इन चाइना. So he fled to Japan to work out the future strategy. So by the end of 1913, Yuan उन्होंने बिल्कुल पावर अपने हैंड में वैसे ही ले ली, and he made the parliamentary assembly meaningless. And this is where now we will be talking about the revolt of 1949. Of course, there was the rise of national spirit. There was advent of new ideas. With the modernization of Japan, it was now realized that time is there to modernize China as well. And rise of Mao Tse-Tung. Now, this is very, very important because is time pe bache another important I will just end with a very simple thing because Mao Tse-Tung and the communism we'll all discuss in our next lecture. थोड़ा सा मैं आपको ये बता देती हूँ. Now, Yuan Shikai was a powerful person, but after his death, the central government became very weak. आप ये कहो कि इस रेवोल्यूशन के तकरीबन 10 साल के बाद जो है, the forces or the followers of the Yuan Shikai were now divided into 3 groups. एक तो Peking था, that is your Beijing. यहाँ पर भी they were struggling with one another. South में there was revolutionaries under Sun Yat Sen. They had got together. He had formed his Kuomintang party as well. But जो डॉक्टर सन यात सन के expectations थे from the republic, that had not been fulfilled, right? Now, because of the high-handedness of the Yuan Shikai, the rulers of the provinces, they had formed their own forces. हम इसको ना बच्चे कई दफ़ा एरा ऑफ वॉरलॉर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोविंसेस, ये गवर्नर्स जो हैं, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, अपनी अपनी आर्मीज़ बनाना शुरू कर दिया. सो वी ऑल्सो कॉल दिस एज द एरा ऑफ द वॉरलॉर्ड. अब after the death of Yuan Shikai, the rulers of the provinces, they set up free, उन्होंने अपने गवर्नमेंट्स बना दिए. अब क्योंकि चाइना की इस वीकनेस का फ़ायदा किसने लिया? रशिया ने. सो रशिया गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्रोपगेट कम्युनिस्ट आइडियाज इन द south. And in the north of China, Japan got many privileges. Now, अभी आप देखोगे कि इन सब का जो नतीजा क्या होगा, that a communist government will be established in China in 1949. So with this, I think let me end it here, and the rest of the details we will talk in my next lecture, the Chinese Revolution of 1949. I hope the things are clearer to you. My advice to you would be, please go back, and after listening to this video, please go back to your books, try to read it again, and I'm sure the things will be much more clearer. Thank you so much, and I will see you very, very soon with the Chinese Revolution of 1949. Thank you.